Some echo is coming. Hare Krishna. So we were discussing about, please proceed ahead. We were discussing about what? So we are discussing about Prahlad Maharaj, of course. Hare Krishna. So we had been discussing about that how Prahlad Maharaj is praying to Nrsimhadev that, oh Lord, you are other side of Vaitarni and we are this side of Vaitarni. And in this way, we are caught up here. And people in this world are eating horrible things. And in this way, they are suffering. So Prahlad Maharaj is praying that, oh Lord, please be merciful upon us. Not only me, but all other people also. दूसरे के लिए भी प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं. So we could learn that how Prahlad Maharaj prayed. Then we are proceeding ahead. And also we saw that every time Prahlad Maharaj is asking one thing. What is the one common thing in his so many prayers, like many times it has come. एक चीज बहुत बार आता है. क्या आ रहा है? कोई बोल सकते हैं? Quickly. एक चीज बार बार पूछ रहे हैं प्रहलाद महाराज. You can write down in the chat box also. आप chat box में लिख सकते हैं. क्या बार बार पूछ रहे हैं प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव से? Quickly, Prabhus, if you are there, if you remember anything, quickly write down the chat box. What Prahlad Maharaj is asking to Nrsimhadev every time he prays? My heart will be free from material. Yeah? When will my heart be free from material desires? Yeah, not that. Yeah, yes, this is the answer. Be in the association of devotees always. Yes, this he is asking. Be in the association of devotees always. Oh Lord, please give me association of your devotees who could know to whom I could serve. So in this way. Now let's proceed ahead with further discussion from text 43. Text 42 we had to discuss also. Oh, text 42 we had discussed. So we shall proceed from text 43. Naivo duje paraduratya vaitaranyas. If you can follow it, you could recite, that will be good, Prabhu. You can unmute yourself and recite also. Naibodhije paraduratya vaitaranyas. Naibodhije paraduratya vaitaranyas. Vadvirya gayan mahamritam magna chittaha. Tadvyana mahatmrita magna chittaha. Sochetato vimukha chetasa indriyartha. Sochetato vimukhatasa chetasa indriyartha. Maya shukhaya bharma udvato vimudhan. Maya sukhaya bharma udbhato vimudhan. Translation. O best of the great personalities, I am not at all afraid of material existence, for wherever I stay, I am fully absorbed in thoughts of your glories and activities. My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies, and countries. I am simply concerned with love for them. So this is also one of the most quoted slokas from prayers of Prahlad Maharaj. So here Prahlad Maharaj is telling that मुझे कोई problem नहीं है. I don't have any problem because I am fully engaged in the glorification of your pastimes and your glories. But I am simply concerned about the people around. Purport. Throughout the entire world, everyone is making big plans to adjust the miseries of material world. And this is true at present, in the past and in the future.
Nonetheless, although they make elaborate political, social, and cultural plans, they have all been described herein as Vimudha, fools. A material world has been described in Bhagavad Gita as Dukkhalyam Asaswatam, temporary and miserable. But these fools are trying to turn the material world into Sukhalyam, a place of happiness, not knowing how everything acts by the arrangement of material nature, which works in her own way. Prakriti kriyamanani gunai karamani sarvashah ahankara vimudhatma karta aham iti manyate. The bewildered spirit soul, under the influence of three modes of material nature, thinks himself to be the doer of activity that are in actuality carried out by nature. There is a plan for material nature, personally known as Durga, to punish the demons. There is a plan for material nature. Material nature's other name is Durga. So she punishes demons. So demons कौन है? Although the asuras, the godless demons, struggle for existence, they are directly attacked by goddess Durga, who is well equipped with 10 hands with different types of weapons to punish them. 10 hands with different types of weapons. She is carried by her lion carrier, or the modes of passion and ignorance. Everyone struggles very hard to fight through the modes of passion and ignorance and conquer material nature. But at the end, everyone is vanquished by nature's law. So there is a river known as Vaitarni between the material and spiritual worlds. And one must cross this river to reach the other side of the spiritual world. This is an extremely difficult task. As the Lord says in Bhagavad Gita, Devi Hesha Gunamai Mama Maya Duratyaya. This divine energy of mind, consisting of three modes of material nature, is difficult to overcome. The same word Duratyaya, meaning very difficult, is used here. Therefore, one cannot surpass the stringent laws of material nature except by the mercy of the Supreme Lord. Nonetheless, although all materialists are baffled in their plans, they try again and again to become happy in this material world. Therefore, they have been described as Vimuda, first-class fools. As for Prahlad Maharaj, he was not at all unhappy. For although he was in the material world, he was full of Krishna consciousness. Those who are Krishna conscious, trying to serve the Lord, are not unhappy. Whereas one who has no assets in Krishna consciousness and is struggling for existence is only foolish. Not only foolish, but extremely unhappy also. Prahlad Maharaj was happy and unhappy simultaneously. He felt happiness and transcendental bliss because of his being Krishna conscious, yet he felt great unhappiness for the fools and rascals who make elaborate plans to be happy in this material world. तो प्रहलाद महाराज कुल मिला के बता रहे हैं कि देखिए यहाँ के लोग इस मटेरियल वर्ल्ड जो कि अशाश्वत है और टेम्परेरी है और क्या है, दुख से भरा हुआ है, फिर भी बहुत सारे प्लान करते हैं कि कैसे हम इस जगह को परमानेंट बना सकते हैं, परमानेंटली इनहैबिटेबल बना सकते हैं। बहुत सारे चीज़ों का प्रयास करते हैं पाने का, जिससे कि हमेशा यहाँ पे खुश रह सकें, सुखी रह सकें। तो इसलिए प्रहलाद महाराज उनको बोल रहे हैं कि ये विमूढ़ लोग हैं, विमूढ़ा, विशेष रूप से मूढ़ लोग हैं, विशेष रूप से मूढ़ा लोग हैं। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड को कितना भी आप अच्छा सजा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला इसका। जैसे सुअर के बाड़े को कितना भी अच्छा उसको सजा दें, और सुअर जब आएंगे तो सब कुछ कीचड़ ही कर देंगे, है कि नहीं? सिमिलरली दिस मटेरियल वर्ल्ड इज बाय डिफॉल्ट अ प्लेस ऑफ मिजरी, बाय डिफॉल्ट इट इज प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड एनिलेशन एंड अगेन क्रिएशन एंड एनिलेशन। तो इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने क्या फायदा? प्रहलाद बोल रहे हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो देख के इन लोगों को सोच रहा हूं कि इन लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली। आई एम ऑलवेज हैप्पी ग्लोरीफाइंग योर लॉर्डशिप, बट आई एम थिंकिंग आई एम हैविंग सफरिंग एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस पीपल। तो यह है लक्षण, या यह है वैष्णव का हृदय। वैष्णव आर ऑलवेज अनहैप्पी सीइंग अदर्स अनहैप्पी। वैष्णव का यही गुण होता है कि दूसरे को दुख देख के वो दुखी होते हैं। प्रहलाद महाराज सुखी भी हैं। प्रहलाद महाराज सुखी क्यों हैं?
अपने लिए उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिवोटीज दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. यूजुअली वी से भक्तों का कोई प्रॉब्लम नहीं होता. उनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, मतलब क्या, वो भक्ति को समझ में नहीं आया उनको. यूजुअली इट इज टोल्ड दैट डिवोटीज हैव नो प्रॉब्लम्स. A devotee means if they are Krishna conscious, Krishna Chaitana mein. If somebody is in Krishna consciousness, for he himself, he will not have any problem. It's by default. The problem starts from when we are not Krishna conscious. So devotees are Krishna conscious. Krishna conscious means they are happy serving the Lord. The service itself gives great satisfaction, happiness. So for them, then they themselves, they don't have any problem. But they are having actually a problem again. Problem for others. So which option is good? If we are Krishna conscious, then we are having no problem. And we are thinking about the problems of others. Or not being Krishna conscious and thinking about our own problems. Because cause of all problems is lack of Krishna consciousness. If we are not thinking about Krishna, if you are not able to see the hands of Krishna in our life, then by default we are in miseries. By default we are in problems. Yeah. So which option is correct? First one is the second one. Yes, Prabhus, what you say? पहला ऑप्शन सही है या दूसरा ऑप्शन सही है? अपने लिए रोते रहना सही है या फिर दूसरे के लिए थोड़ा रोना सही है? Which one is correct? अपने लिए सही है, दूसरे के लिए सही है? फर्स्ट वन, अपने लिए रोना चाहिए. अपने लिए रो रहे हैं मतलब क्या? We have not yet matured in Krishna consciousness. If we are crying for our own self, then we are not mature. So usually devotees, they cry for our own self. Sri Krishna Chaitanya Prabhu daya koro more, tama bina ko dayalu jagata sansare. मोह सम पतित प्रभु ना पाई बेयार. मेरे जैसा पतित भगवान कोई नहीं है. मेरी कृपा आपके ऊपर सबसे पहली होनी चाहिए. Of course we should cry, we should pray, but at the same time when devotee advances in Krishna consciousness, he prays for others also at the same time. And when he comes to much advanced level like Prahlad Maharaj, then he prays for others only, almost like others only, because for he himself there is no problem. As we are going to come in future slokas, for him wherever he is, whether he is in hell, whether he is in heaven, he is fully happy glorifying the Supreme Personality of Godhead. Because glorifying the Supreme Lord means it itself is a source of immense, unlimited amount of pleasure. So for he himself, he don't have any case, don't have any problem. But he is having great problem seeing the suffering of the people, what they are doing, how they are suffering, life after life, whole day till night, without having any connection with Krishna. So now next let's proceed ahead. What Prahlad Maharaj is telling. Now Prahlad Maharaj is going to tell that I don't want alone the liberation. Prayena deva muneya savimukti kama. Savimukti kama. Maunam charanti vijanena parartha nishtha. Maunam charanti vijanena parartha nishtha. Naitan vihaya kripana vimumuksha eko. Naitanam vihaya kipana vimumuksa eko. Nanyam tadasya sharanam brahmato nupasye. Nanyam tadasya saranam brahmata anupasya. अनुपश्य. कोई पढ़ सकते हैं इसको जोर से? Hopefully you are able to see the shared screen. Yeah? And we like to read? Please read. Oh, it went down. Prayena Deva Munya. Yes. From here. Please read. If anybody is comfortable with reading, please read.
My dear Lord Nrsimha, I see that there are many saintly persons indeed, but they are interested only in their own deliverance, not caring for the big cities and towns. They go to the Himalayas or the forest to meditate with vows of silence. They are not interested in delivering others. As for me, however, I do not wish to be liberated alone, leaving aside all these poor fools and rascals. I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy. Therefore, I wish to bring them back to shelter at your lotus feet. Yes. So Prahlad Maharaj is telling that there are so many people that do follow different types of activities for their liberation. But I do not want that. This is the decision of a Vaishnava. परपट कोई पढ़ना चाहते हैं? जोर से पढ़ सकते हैं. Okay, I'll read this then. This is the decision of Vaishnava, the pure devotee of the Lord. For himself, he has no problems, even if he has to stay in this material world, because his only business is to remain in Krishna consciousness. The Krishna conscious person can go even to hell and still be happy. Therefore, Prahlad Maharaj said, Naivo duje paraduvatya vaitaranya. O best of great personalities, I am not at all afraid of material existence. The pure devotee is never unhappy in any condition of life. This is confirmed in Srimad Bhagavatam 6:17-28. Narayana para sarve na kutaschana bibhyati swargapavarga narkesu apitulyartha darshinaha. Devotees solely engaged in devotional service of the Supreme Personality of Godhead Narayana never fear any condition of life. For them, heavenly planets, liberation, and the hellish planets all the same. For such devotees are interested only in the service of the Lord. For a devotee being situated in the heavenly planets or being in the hellish planets are equal. For a devotee lives neither in heaven nor in hell, but with Krishna in the spiritual world. The secret of success for the devotee is not understood by the karmis and jnanis. Karmis therefore try to be happy by material adjustment, and jnanis want to be happy by becoming one with the Supreme. The devotee has no such interest. He is not interested in so-called meditation in Himalayas or the forest. Rather, his interest is in busiest part of the world, where he teaches people Krishna consciousness. The Krishna consciousness movement was started for this purpose. We do not teach one to meditate in the secluded place just so that one may show that he has become very much advanced and may be proud of his so-called transcendental meditation. Although he engages in all sorts of foolish materialistic activity, a Vaishnava like Prahlad Maharaj is not interested in such a bluff of spiritual advancement. Rather, he is interested in enlightening people in Krishna consciousness because that is the only way for them to become happy. Prahlad Maharaj says clearly, Nanyam tadasya saranam brahmatonupasya. I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy. One wanders within the universe life after life. But by the grace of a devotee, a servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu, one can get the clue to Krishna consciousness. And then not only become happy in this world, but also return home back to Godhead. That is the real target in life. The members of the Krishna consciousness movement are not at all interested in so-called meditation in Himalayas or the forest, where one will only make a show of meditation. Nor are they interested in opening many schools for yoga and meditation in the cities. Rather, every member of Krishna consciousness movement is interested in going door to door to try to convince people about the teachings of Bhagavad Gita as it is. The teachings of Lord Chaitanya. That is the purpose of the Hare Krishna movement. The members of the Krishna consciousness movement must be fully convinced that without Krishna one cannot be happy. Thus, the Krishna conscious person avoids all kinds of pseudo-spiritualists, transcendentalists, meditators, monists, philosophers, and philanthropists. Yeah. So they are pseudo-spiritualists, transcendentalists,
Prabhupada has termed them all here. But we know that Krishna consciousness is all encompassing. The Krishna conscious people are the real spiritualists, transcendentalists, meditators, and monists. So, Narayana para sarvena kutashchan vibhati. So this is the sloka quoted from Vritrasura Upakhyan, where Vritrasura is actually being condemned by Parvati, Mother Parvati, that you will become demon. But he's telling that I don't have any problem, Mother Parvati. If you had told me to take birth as a demon, no issue. I'll be there also glorifying the Supreme Lord. I will be happy. I don't have any problem, whether I go to hell or to heaven or anywhere. So devotees don't have any problem because they are devotees. So devotees means always Krishna conscious. Being Krishna consciousness, I mean, just thinking about Krishna itself gets them out of all different types of frustrations, lamentations and hankerings. जो 6 जो त्रिताप हैं, चुत, पिपासा, हैंकरिंग, लमेंटेशन, सबसे वो बाहर निकल जाते हैं. So this is very, very obvious that Prahlad Maharaj is telling that I don't have any problem. I don't want to just seek for liberation, because for me liberation is already there. Somebody is able to chant the holy name Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, in association of devotees, means almost he is liberated, so long he is there. I mean, so for me, I don't want to go to Himalayas and do meditation, so-called meditation. I want to remain at the busiest part of the world, where there are people, foolish people, busy gratifying their senses. They're trying to procure different gadgets, different amenities to satisfy their senses. मैं वहाँ पे रहना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे रह के मैं क्या कर पाऊंगा, प्रचार कर पाऊंगा, लोगों को बता पाऊंगा भगवान के बारे में. तो कर्मी है जो कि ज्ञानी है, जो कि और अदर ट्रांसेंडेंटलिस्ट, सो कॉल्ड ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, उनका जो मार्ग होता है वो कैसा होता है, बंदर की तरह होता है. उसको कहते हैं योग रुरुक्षु. तो योग में 2 स्थिति होती है, भगवान को कनेक्ट करने में 2 स्थिति. एक को कहते हैं योग रुरुक्षु और दूसरे को कहते हैं योगारूढ़. योग रुरुक्षु मतलब आप भगवान से कनेक्शन करने की चेष्टा कर रहे हैं, भगवान से कनेक्शन करने की आप चेष्टा कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, बहुत सारा चीज कर रहे हैं. इसको कहते हैं योग रुरुक्षु. इसकी बंदर से तुलना की गई है. श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बंदर के बच्चे जब एक डाल से दूसरी डाली पे उनको क्या मतलब जंप करते हैं ना, तो खुद नहीं जंप कर सकते हैं. तो अपनी माँ की पेट को पकड़ के जब माँ जंप करती है तो उनके साथ भी जंप कर जाते हैं. लेकिन बच्चे को जंप करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है ध्यान में रखना, कि माँ की पेट को पकड़ के रखें. अगर थोड़ा सा भी ढीला किया तो उसका बच्चा, बंदर का बच्चा जो है वो गिर सकता है. सो दिस इज द प्लेटफॉर्म इन विच अदर transcendentalist spiritualists they work. So if they are not so much attached with the process what they are doing, and they are debating a little bit, they may fall down. But for devotees, if they are in association of devotees, so just by chanting Hare Krishna mantra, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, taking prasadam, so simple, devotees remain always on the transcendental platform, never to fall down. Just like this is called yoga rood platform. Means like cat when it takes its kitten from a very dangerous place to a better safer place. तो वो कैसे करती है, अपने बच्चों को ऐसे पकड़ती है जबड़े में और वहां से लेके चले जाती है. And the kitten is most like feeling very very safe there, है कि नहीं, कोई डर नहीं है. So devotee जब भक्ति में रहते हैं तो उन्हें कोई भी डर नहीं होना चाहिए. Actually कोई डर नहीं है. If devotees are in Krishna consciousness, in association devotee is most safe. Actually he is already in the vicinity of Krishna. Krishna as holy name, Krishna as Srimad Bhagavatam,
Krishna as deities are always there around devotees. And in this way, he is fully like a small little kitten in the jaw of kitten's mother, cat. And then he can think about others. So this is the position of a devotee, very, very safe position. But for a transcendentalist, very difficult position. That's why Prahlad Maharaj is telling, I don't want to go there. But devotees, when they are connected with disciplic succession, then they can act very, very miraculously. Because their association is sought even by great demigods. Why? Because their association can transform the whole course of history of living entity. अभी तक जिस किसी भी स्पीसीज में थे, जहाँ कहीं भी थे, जो भी कुछ कर रहे थे, जैसे ही भक्तों का संसर्ग होता है, हरे कृष्ण नाम उनके मुख से सुनते हैं, तो उनके जीवन में क्या आता है? क्रांति आती है, उनका जीवन चेंज होने लगता है. अन्यथा बहुत सारे लोग हैं सो कॉल्ड मेडिटेटर्स, ट्रांसडेंटलिस्ट्स, उनकी लेक्चर सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, लेकिन कोई चेंज नहीं आता है. क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है भगवान से. दे आर नॉट ऑन द योगा रूट प्लेटफॉर्म, दे आर स्टिल इन योगा रुक्ष प्लेटफॉर्म. तो बड़ी बड़ी कथाएं सुन के आ जाते हैं, ये ब्राह्मण है, वो ये है, फलाना है, ढिमखाना है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी नहीं होता. यहाँ तक कि जो बोल रहे होते हैं उनकी भी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखा होता है. सो दैट्स वाई प्रहलाद महाराज टेलिंग कि मैं सबसे बिजीएस्ट जगह पर रहना चाहूँ जहाँ पे ज़्यादा लोग मुझसे मिल सके, एंड ज़्यादा लोगों को मैं भगवान श्री कृष्ण के ग्लोरीज के बारे में, उनके नाम के बारे में गुणगान कर सकूं. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. प्रहलाद महाराज की आगे वाली जो प्रार्थना है, तो ये श्लोक, दिस ऑल्सो वन ऑफ द वेरी मच कोटेड श्लोक बाय श्रील प्रभुपाद. दिस इज 45th. यन्मैथुनादि गृहमेधि सुखं वितुच्छम् यन्मेदियादि गृहमेदि सुखं हि तुच्छम् कण्डूयनेन करयोरिव दुःखम् कण्डूयनेन करोयव दुःखम् तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःखभाजः तृप्तन्ति नेह कृपणा बहु दुःखभाजः कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः कण्डूतिदीनं मनसिजं विषहेत जीजः विषहेत धीरः धीरः विषहेत धीरः. तो इसका ट्रांसलेशन है, वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन. कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और else I'll read. You can raise your hand if you like to read. Yeah, please proceed ahead. Sex life is compared to the rubbing of two hands to relieve an itch. Grihamedis, so-called grihasthas who have no spiritual knowledge, think that this itching is the greatest platform of happiness, although actually it is a source of distress. The kripanas, the fools, who are just the opposite of brahmanas, are not satisfied by repeated sensuous enjoyment. Those who are dhira, however, who are sober and who tolerate this itching are not subjected to the suffering of fools and rascals. Sure. Srila Prabhupada is banging. Materialists think that sexual indulgence is the greatest happiness in the material world, and therefore they make elaborate plans to satisfy their senses, especially the genitals. This is generally found everywhere, and specifically found in the Western world, where there are regular arrangements to satisfy sex life in different ways. Actually, however, this has not made anyone happy. Even the hippies, who have given up all the materialistic comforts for their fathers and grandfathers, cannot give up the sensational happiness of sex life. Such persons are described here as kripanas, misers. A human form of life is a great asset, for in this life one can fulfill the goal of existence. Unfortunately, however, because of a lack of education and culture, people are victimized by the false happiness of sex life. Prahlad Maharaj therefore advises one not to be misled by this civilization of sense gratification.
and especially not by sex life. Rather, one should be sober, avoid sense gratification, and be Krishna conscious. The lusty person who is compared to a foolish miser never gets happiness by sense gratification. The influence of material nature is very difficult to surpass, but as stated by Krishna in Bhagavad Gita, Mam evaye prapaddante maya metam tarantite. If one voluntarily submits to the lotus feet of Krishna, he can be saved very easily. तो प्रहलाद महाराज बहुत ही ग्राफिक एग्जाम्पल दे के यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति जिन व्यक्तियों का पर्पज ऑफ लाइफ क्या होता है, पर्पज ऑफ लाइफ होता है सिर्फ इंद्रिय मैथुन सुख और सेक्स लाइफ। तो संसार में सबसे बड़ा जो आनंद है सेक्स लाइफ ही है, और सब कुछ सेक्स लाइफ के इर्द गिर्द चल रहा है। Maslow's laws बोलते हैं ना, the whole economic system is actually Maslow's or Fried's law. If I'm incorrect, you can correct me, Prabhu. There is some law in which it is told that no, whole economic system, economic development is actually because of the sex. Sex is the center everywhere we see. So that's the greatest pleasure in this world. जन मैथुनादि गृह में यदि सुखम तुच्छम। लेकिन कृष्ण भक्ति, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, कृष्ण भक्ति की रस के सामने ये सुख तुच्छम है। वाह, बताइए, तुच्छम है। तुच्छम मतलब कुछ नहीं, सुखम ही तुच्छम। कैसा सुख है ये? कंडू यानी न करयोर इव दुख दुखम। कंडू बोलते हैं खुजली को। कई बार खुजली आती है तो मतलब खुजली करते हैं, और खुजली करने से थोड़ा मजा आता है, और खुजलाने का मन करता है और मजा आता है, और खुजलाते हैं और मजा आता है। खुजलाते जब छोड़ नहीं पाते हैं खुजली को तो क्या होता है, एट लास्ट वहां से ब्लड निकलने लगता है। कंडू यानी करियोर मतलब करियो मतलब हाथ का खुजलन। ये दुख दुखम। अब लग रहा है कि मजा आ रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि बेटा इतना खुजला रहा है और उसमें से ब्लड निकलेगा। तो यही इस मटेरियल वर्ल्ड का नियम है। पीपल दे फाइंड लाइक सेक्स लाइफ इज अ सोर्स ऑफ अनलिमिटेड हैप्पीनेस। वाह यार, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, जवानी है, दीवानी है, चल बेटा आप जितना करना है कर। लेकिन व्हेन दे गो फॉर इट, दे एक्चुअली reduce their lifespan. They get so many diseases just because of this, and in few years they just leave the human body, and somewhere they are seen loitering in the cat's body or dog's body or frog body, and in this way they roam around. इसलिए प्रहलाद बोलते हैं कि ये तुच्छ है, इसमें उतना खुश आनंद नहीं है। सुखम ही तुच्छम, because Krishna consciousness is unlimited ananda. The real ananda is there in Krishna consciousness, the association and the relationship with Krishna. और उसका रिफ्लेक्शन है ये जड़ानंद, तो जड़ानंद बोला जाता है। तो प्रहलाद बोलते हैं ये सुखम ही तुच्छम है। कंडू यनेन करे इव दुखम है। कृपंतने कृपणा बहु दुख बाध। लेकिन ये जो कृपण लोग इस तरीके से इसके फंद में पड़ के बहुत दुख भाजा, मतलब भाजन करते हैं। भाजा मतलब पटल भाजा और करेला भाजा नहीं, भाजा मतलब खाते हैं। भाजा बनाते हैं, पाप को बनाते हैं और उसका फल खाते हैं, है ना, तो भाजा। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो कृपण ब्राह्मण होते हैं, बहुत दुख भाजा, वो क्या करते हैं, सहन करते हैं। अभी कृष्ण भावना का रस नहीं मिल रहा है, कई बार शुरुआत में कृष्ण भावना का उतना आनंद नहीं मिल रहा है, तो सोचते हैं यार क्या आनंद नहीं मिल रहा है। लोग बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु है। सिंधु मतलब ओशियन है। कैसा ओशियन है, वो भी अनलिमिटेड बढ़ता जा रहा है। लेकिन सिंधु का टेस्ट नहीं मिल रहा, तो क्या किया जाए, थोड़ा सा छोटे से जो डिच में थोड़ा कूड़ा कटकट वाला गंदा पानी, चलो उसी में डुबकी लगा लेते हैं। तो अगर उसमें डुबकी लगा लिए तो फिर वो वाला छूट जाएगा, चांद से छूट जाएगा, हम लोग समुद्र के पास नहीं पहुंच पाएंगे। That's why I don't want to tell the name of person. One philosopher used to say that if I could not reach to the ocean, it doesn't mean that I should go in a small little ditch and take bath in that ditch water. I don't want to do that.
So there is ocean of unlimited happiness in Krishna consciousness. Just we have to wait. And we have to resist and the temptations of this khujli itching, kandu yanena karyor. लेकिन खुजलाने लगे तो खुजलाते खुजलाते ही हमारा समय चला जाएगा, and we will land up bleeding and a lot of suffering is awaiting. So we have to wait. That's why Rupa Goswami is telling that patience is required. Patience. कई बार पेशेंस भूल जाते, प्रभु जी इतना दिन हो गया, इतना महीना हो गया जब करते हुए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, अब देख क्यों नहीं रहे हो? तो इस ग्रेट शंकर संताप प्रभु बोलते हैं कि आज भर्ती कल चक्रवर्ती कैसे हो सकते हो? You need to give some particular amount of time. Krishna consciousness is not just okay, चलो माला ले लिए तो फिर जैसे ही माला आगे बढ़ेगा वैसे ही आनंद बढ़ता रहेगा. It's not required. We must have our anarthas go slowly. Then we can really release the Krishna consciousness. So प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि अगर लोग चाहते भी हैं, जिसके कारण इतना सारा जो कर रहे हैं, they're trying to create the whole material world as to be like permanent place, just because of this small little meager amount of ananda, meager amount of happiness. That's called maithuna sukh. यमुनाचार्य जी बोलते हैं क्या कि मैं भक्ति की रसों में इतना आनंद हिलोरे लेता हूं कि जब मैं सोचता हूं, मेरे दिमाग में आता है नारी के साथ संग करना, तो मेरे मुख में सिकुड़न आ जाती है. भवती मुख विकार सुष्टु निष्टि वनम च, मुख में विकार आ जाता है और उसके ऊपर मैं थूक देता हूं. सो दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस व्हेन वन हैज ऑलरेडी गॉट टेस्ट ruchi, asakti, bhava and prema. So there, even though sometimes it comes, but devotee they immediately spit over it. Okay, so let's proceed ahead. Text 46. Mauna vrata sruta tapo dhyayan swadharma. कोई है जूम के पार जो इसको फिर से रिपीट कर सकता है? मौना व्रत श्रुता तपो ध्यायन स्वधर्मा. व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या. प्राय परम पुरुषते तु अजितेन्द्रियाणां. वार्ता भवन्ति उत न वात्र तु दाम्भिकानां. ट्रांसलेशन. क्यों पढ़ते चाहिए? एनीबडी लाइक टू रीड? कोई पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं. Or else I'll read. O Supreme Personality of Godhead, there are 10 prescribed methods on the path of liberation: to remain silent, not to speak to anyone, to observe vows, to amass all kinds of Vedic knowledge, to undergo austerities, to study the Vedas and other Vedic literatures, to execute duties of Varnashram Dharma, to explain the Shastras, to stay in a solitary place, to chant mantras silently and to absorb in trance. These different methods for liberation are generally only a professional practice and means of livelihood for those who have not conquered their senses, because such persons are falsely proud. Dambhikanam. These procedures may not be successful. तो ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं सक्सेसफुल नहीं है. इसका वर्णन कई बार श्रीमद् भागवत में बताया गया है. कई लोग असफल हुए हैं. विश्वामित्र मुनि हो या फिर सौबरी मुनि हो, सबके एग्जाम्पल हिस्ट्री में बताए गए हैं. ओनली वन पीपल that gets all the success in the life, those who are एकांत भक्त, or we can say they are called अव्यभिचारी भक्त of Supreme Personality Godhead Sri Krishna. Avyavicharena bhakti yogena sevite. All that anarthas, they simply go away, just like the rising of the sun takes away all different
क्या बोलते हैं उसको, फॉग एंड कुहरा, केचित केवलया मक्त्या वासुदेव परायण अगम धुन्वंति कार्त्स्नेना निहारम इव भास्करः. Only a rare person who has adopted complete unalloyed devotional service to Krishna can uproot the weeds of sinful actions with no possibility that they will revive. तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से जितने भी सिंफुल डिजायर्स हैं या फिर जो जितने भी अनर्थ हैं सब अपरूट हो जाते हैं. और ये सब चीज़ करने से हो सकता है कि ऊपर से काट दिए गए हैं लेकिन जड़ अभी बाकी है. जैसे ही ये सब चीज़ सीज करते हैं करना, जैसे कुछ तपस्या कर लेते हैं, कुछ वेद पढ़ लेते हैं, कुछ सॉलिटरी जगह पर रह लेते हैं, but when they cease to do these all things, immediately all the different anarthas starts coming up again and again. Okay, आगे बढ़ते हैं हम लोग. This will be the last sloka for today's. रूपे मे सदसति तव वेद सृष्टे रूपे मे सरस्वती तव वेद सृष्टे बीजांकुरावैव नाचान्यद अरूपकस्य युक्ता समक्षम उभयत्र विचक्षन्ते त्वां योगेन वहनिमिव दुरासु नान्यथा स्यात्. नान्यथा स्यात्. Okay, translation. Yes, anyone? बोलो बोलो बोलो, हरि हरि बोलो. By authorized Vedic knowledge, one can see that the forms of cause and effect in the cosmic manifestation belong to the Supreme Personality of Godhead. For the cosmic manifestation is His energy. Both cause and effect are nothing but energies of the Lord. Therefore, O my lords, just as a wise man, by considering cause and effect, can see how fire pervades wood, those engaged in devotional service understand how you are both the cause and effect. तो कॉज एंड इफेक्ट की चर्चा यहाँ पे की गई है, तो काफ़ी थोड़ी टेक्निकल है. कॉज मतलब किसी चीज़ को होने से पहले वाली जो कॉज है उसको कॉज कहते हैं. तो प्रहलाद बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप जितना भी सारा जो कॉज एंड इफेक्ट का जो साइकिल चल रहा है यहाँ पे, जैसे बहुत सारे साइकिल्स हम लोग पढ़ते हैं, कार्बन साइकिल है, वाटर साइकिल है, फूड वेव्स है, एनर्जी साइकिल है, तो सब में कॉज एंड इफेक्ट्स है. इसका कॉज ये है, बादल का कॉज सन है और ओशन है, फिर रेन का कॉज बादल है, फिर रेन फिर से ओशन में जाती है. पूरा जो कॉज एंड इफेक्ट का जो चक्कर चल रहा है, आप हर जगह विद्यमान है. और ऑफ कोर्स पूरा एलिमेंटल क्रिएशन हुआ है. सबसे पहले स्काई बना, स्काई साउंड बना, साउंड के बाद स्काई बना, स्काई बनने के बाद सेंस ऑफ टच या फिर सेंस ऑफ फीलिंग, उसके बाद फिर क्या बनता है, हवा बनता है. तो हर जगह आप विद्यमान है, सब कुछ आपसे ही आ रहा है, लेकिन आप प्रत्येक चीजों में विद्यमान है. प्रहलाद बोल रहे हैं जैसे कि लकड़ी के अंदर फायर विद्यमान है. तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉज, इफेक्ट में कॉज का रहना. जैसे लास्ट में बनता है फायर, लास्ट में बनता है क्या, लास्ट में बनता है लकड़ी या फिर अर्थ. तो अर्थ में फायर, वाटर, एयर एंड स्काई ऑल आर देयर. सिमिलरली उससे पहले फायर से अर्थ से पहले क्या बनता है, अर्थ से पहले क्या बनता है, वाटर. तो वाटर में क्या होता है, वाटर में फायर भी होता है, फायर भी होता है, हवा भी होती है और स्काई भी होती है. सो इन दिस वे एवरीथिंग हैज एक्चुअली कम फ्रॉम सुप्रीम कॉज कृष्णा. प्रहलाद महाराज इज टेलिंग दैट, ओ लॉर्ड, यू आर परवेडेड एवरीवेयर. So we shall proceed ahead from next sloka, sloka number 48 from tomorrow. Hare Krishna. Anything to discuss? Any question, query we can have for more 4 seconds are left. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Okay, Srila Prabhupada ki, Granthra Srimad Bhagavatam ki, Gaur Jai. Premanande, Hare Hare Bol. Hari Hari Bol. About this.